Hey everyone, welcome back to our YouTube channel India Technical RKS. Today we are diving into the highly appreciated Oppo Find X8 and Find X8 Pro. Yes, if you are in the market for a cutting edge smartphone, you are going to want to hear what this device brings to the table. Before we get into the details, don't forget to like, comment and subscribe to stay updated with the latest tech videos. Let's jump right in. So first of all, we will overview the both phones. So both the Oppo Find X8 and X8 Pro are already launched in China on October 24, and they are already creating buzz. These two phones continue Oppo's reputation for impressive spaces and design, and today we are breaking down the key features, spaces and what sets these two models apart. So before that, we will give a score, spaces score. So Oppo Find X8 जो out of 91 है and Oppo Find X8 Pro जो out of 100 आपको 94 यहाँ पे देखने को मिलता है, जो ऑनलाइन पे पूरा रिसर्च करके अभी तक ओवरव्यू आ चुका है. So these scores highlight some top tier spaces, with the Pro model offering a slight edge in a few areas. So now we are going to talk about design and display. Starting with the design, both phones are sleek and elegant, available in colors like black, white, blue and a unique pink option for the X8. And the X8 weighs in at a lighter 193 gram, while the X8 Pro is a bit heavier at 215 gram but has a larger screen. So display, Find X8 में आपको 6.59 इंच का AMOLED screen with a resolution of 1256 into 1760 megapixel and a 120 Hz refresh rate आपको देखने को मिलता है. एंड Find X Pro पे आपको 6.78 इंच का LTPO AMOLED display with slightly higher resolution of 1264 into 1718 megapixel and the same of 120 Hz refresh rate for smooth and vibrant visuals. Both displays support Dolby Vision and HDR10 Plus, offering impressive viewing experience with up to 1600 nits peak brightness, perfect for those bright and sunny days. So अभी हम बात करने वाले हैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में. So both the device have conic Gorilla Glass Victus 2 rated with IP68 for water and dust resistance, make them both durable to the elements. So next हम बात करने वाले हैं कैमरा के बारे में. So let's talk about the cameras. A big selling point for the both models Find X8, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल जो वाइड कैमरा आपको देखने को मिलता है एंड 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो, साथ में आपको 3x ऑप्टिकल जूम एंड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है. एंड Find X Pro में ए सिमिलर सेटअप बट विथ ए एडिशनल 6x ऑप्टिकल जूम, ग्रेट फॉर दोज हु लव कैप्चरिंग डिटेल्स फ्रॉम डिस्टेंस. वो devices come with 1 inch camera sensor offering incredible clarity and blue light performances. and दोनों फोन में आप हसल ब्लेड कलर कैलिब्रेशन देखने को मिलता है, जो बहुत ही नेचुरल कलर को एक्यूरेसी एंड लेजर ऑटो फोकस में सुपर शार्प फोटोज वगैरह आपको इजीली क्लिक करके दे सकता है. एंड वीडियो कैपेबिलिटीज में 4K at 30 fps एंड 1080p का बोथ फ्रंट एंड बैक कैमरा में देखने को मिलता है, जो आपको
स्मूथ एंड हाई क्वालिटी वीडियो कैप्चर करके देगा। एंड अभी हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस के बारे में। सो बोथ द फाइंड एक्स एंड फाइंड X8 Pro कम विद इक्विप्ड विद द मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 चिपसेट। यस, आपको यहाँ पर 9400 चिपसेट देखने को मिलता है एंड ए पावरफुल 3.63 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। दे रन ऑन Android 15 and Oppo's latest Color OS 15, bringing a clean and customizable user experience. Yes, so for graphics we have the Immortals Z925 GPU। यस, आपको यहाँ पर Z925 GPU जो बहुत ही अच्छा GPU आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, मेकिंग दिस फोन आइडियल फॉर गेमर्स एंड हैवी मल्टीटास्कर। यस, अगर आप भी मल्टीटास्कर हो या फिर गेम खेलते हो, गेमर हो, तो फिर आपके लिए ये फ़ोन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाने वाला है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रैम एंड स्टोरेज। बोथ मॉडल्स पैक 12 GB ऑफ रैम एंड 256 GB of internal storage using the latest UFS 4.0 for faster data access. However, neither model supports expandable storage। तो expandable storage तो आपको आजकल हर फ़ोन में देखने को मिलता ही है। तो एक्सपेंडेबल स्टोरेज के अलावा आपको यहाँ पर 12 GB से स्टार्टिंग रैम देखने को मिलता है एंड 256 GB से आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज स्टार्टिंग देखने को मिलता है। तो इस फ़ोन में आपको 8 GB रैम या फिर 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलने वाला है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। सो फॉर बैटरी लाइफ द X8 हैज़ ए 5630 mAh का बैटरी, while the X Pro has a slight larger 5910 mAh बैटरी। यस, आपको यहाँ पर 5630 mAh का बैटरी फाइंड एक्स में देखने को मिलता है, जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें आपको 5630 mAh देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर अगर हम प्रो वेरिएंट के बारे में बात करें तो प्रो वेरिएंट में आपको स्लाइटली लार्जर बैटरी एमएच देखने को मिलता है, जो है 5910 mAh का। सो बोथ supports 80 watt fast charging and 50 watt magnetic wireless charging, meaning you can stay powered with the minimal downtime. So next we are going to talk about the connectivity and extra features. So both models support डुअल सिम 5G Wi-Fi 7 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो Wi-Fi 7 अभी तक तो शायद किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको Wi-Fi 7 देखने को मिलता है एंड Bluetooth 5.4 भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो Oppo has also included an IR blaster and advanced GPS system। सो यहाँ पर आपको IR blaster जो है वो भी देखने को मिलता है एंड For added security, both models have an in-display fingerprint sensor and face unlock. So ये बहुत ही common बात है। Next we are going to talk about the pricing, and so pricing has not been officially announced yet, but we can expect these phones to be in the premium range. Yes. With top tier spaces, impressive cameras and gorgeous display, both the Oppo Find X and X Pro look like they will be strong competitors in 2024. So which model would you choose, the Oppo Find X or the more advanced X Pro? Let us know in the comment section, and reminder, if you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe for more tech videos. Thanks for watching and we will see you in the next one. So thank you so much.